Hello and welcome. Welcome to our fourth learning session of chapter number 1 of Algebra, which is linear equations in two variables. In our first learning session, we looked at the meaning of various terms given in the title of the chapter, right? We saw what is the meaning of the word equation, what are linear equations, what is the meaning of the word variables, what are constants, so on and so forth. And in the second half of our first learning session, we saw how to solve a special type of simultaneous linear equations, which was if in the first equation whatever is the coefficient of variable y, second equation variable x का वो same coefficient होगा. फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो सेम कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा, राइट. सो इट वाज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसको सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल मेथड सीखा था. If you solve it by that method, it becomes very easy, it becomes very fast. What is that method? You add the two equations, you'll get a third equation. You subtract the same two equations, you get a fourth equation. जो third and fourth equation मिल गया उसको वापस ऐड करो, तुम्हें एक वेरिएबल मिल जाएगा. उसी एक वेरिएबल को किसी भी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, तुम्हें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा. So that was about first learning session. Second learning session, we learned how to solve linear equations using graphical method, right? We know that whenever you draw a linear equation on an xy plane, you get a line. इसलिए उसको linear equation बोलते हैं. The word linear comes from the word line. तो लाइन मिलने वाला है, तो दो लीनियर इक्वेशंस को अगर तुम प्लॉट कर लोगे तो दो लाइन मिलने वाले हैं. दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस ग्राफ पे, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तुम्हारा x का सोल्यूशन है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तुम्हारा y का सोल्यूशन. दैट वी हैड सीन इन आवर सेकंड लर्निंग सेशन. In our last learning session, which was our third learning session, we learned how to solve simultaneous linear equations using Cramer's rule, right? You find determinants d, dx, dy, and you have the formula to find x and y using d, dx, and dy, right? I think personally for me the easiest and the fastest way to solve linear equations is Cramer's rule. Graphical method में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So if I want to solve it very quickly, any simultaneous linear equations, I'll mostly do Cramer's. I'll solve it using Cramer's rule. Okay. The next practice set, which is practice set 1.4, has been omitted from our syllabus for this year due to the pandemic. Okay, so we're going to directly jump to practice set 1.5, which has word problems. So objective for today is going to be students will be able to solve word problems based on linear equations in two variables. Okay, you should be able to solve word problems. Because the skill we want to learn in today's learning session is how to solve word problems, the only thing we're going to focus on is question दिया है, question में से दो equations कैसे बनाने हैं. Once I tell you how to make the equations, y'all will solve the given two equations by yourself. Final answer तुम लोग खुद से लिखोगे. Okay, so I'm only going to teach y'all today how to convert these word problems into two linear equations that you all can solve either using graphical method or using Cramer's rule. Okay, and there are total 6 sums. We'll look at all of them one by one. Okay, so let us begin. First step is always to read the question. Okay, पहले ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ question को read करो. So and first read the question. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 90. Find the numbers. Okay, I got a feeling of the problem, what the problem is trying to tell me. Now you have to solve this word problem using what? Linear equation in two variables. बराबर. तो linear equation using two variables use करके अगर हमें इस problem को solve करना है तो पहले दो equations बनाने पड़ेंगे. Equations में क्या important होता है? Variables, right? तुम्हारे पास दो variables होने चाहिए. तो पहले तुम्हें दो variables assume करने पड़ेंगे. Okay, I'm going to assume this is my first variable, this is my second variable. एक को x ले लेंगे, दूसरे को y ले लेंगे. So the first question you need to answer is क्या variables तुम assume करने वाले हो? And hint 99 times is given in the last sentence, जहाँ पे लोग पूछ लेते हैं कि find out क्या करना है, find the numbers. तो तुम x और y को क्या लोगे? Let x and y be the numbers. Okay, 99% of the time किसको x लेना है, किसको y लेना है, वो हिंट कहाँ पे मिलता है? एंड में, जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है. तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स. तो जो फाइंड आउट करना है उसको x और y ले लेंगे. एज सिंपल एज दैट. ओके, ऑल्सो व्हाट यू मस्ट हैव नोटिस्ड इज देयर इज अ स्मॉलर नंबर एंड देयर इज अ ग्रेटर नंबर. दोनों इक्वल नहीं है. तो एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, तो मुझे बताना पड़ेगा कौन सा छोटा नंबर ले रहा हूँ, कौन सा बड़ा नंबर ले रहा हूँ मैं. ओके, so first write the assumption. Let us assume x to be the greater number
and y to be the smaller number. Okay, so our first step was to read the question. We read the question, थोड़ा समझ में आ गया question किसके बारे में. Second was हमें variables assume करने. तो variables कैसे assume करोगे? Looking at the question, what has been asked in the question. वहां से hint मिल जाएगा तुम्हें x क्या लेना है, y क्या लेना है. Then you assume क्या x ले रहे हो, क्या y ले रहे हो, उसके ऊपर एक line लिख दो. You write a sentence explaining your assumption. So that step is also done. Now you start using the conditions given in the question to form equations. Okay, so where is the first condition? Two numbers differ by 3. This is your first condition. Two numbers differ by 3. This is your first condition. So you'll write from the first condition. Okay, from the first conditions. Two numbers differ by 3 और उन दो numbers को हमने x और y ले लिया है. तो x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, x is the greater number, y is the smaller number. तो x minus y क्या हो जाएगा? Two numbers differ यानी डिफरेंस लोगे, तो डिफरेंस लोगे यानी माइनस करोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया दोनों को. डिफर माइनस डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें आंसर? 3. This is your first equation. So your first equation is ready. You will take that equation as 1. Let us move on to the second equation. Second equation तुम्हें second condition से मिलेगा. What is the second condition? The sum of twice of the smaller number and thrice of the greater number is 19. That's your second condition. थोड़ा सा लंबा sentence है, but it's okay. We'll break it down slowly and we'll figure out उससे equation कैसे बनाना है. Okay, so first I'll write from the second condition. इसको एक के नीचे एक लिखना है, but I'm writing it left to right. Okay, in your notebooks you can write this. इसके बाद तुम from the second condition यहाँ पे नीचे लिख सकते हो. So from the second condition, okay, now let's break it down. Sum, the sum मतलब क्या? Addition. Sum यानी addition. तो sum कहीं पे तो प्लस साइन आने वाला है, मैंने प्लस साइन डाल दिया. Of twice the smaller number. Twice यानी double. Smaller number कौन सा है? Y. डबल ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y का डबल यानी 2y यहाँ पे लिख दिया. सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. जो बड़ा नंबर है उसका थ्राइस बोले, थ्राइस यानी ट्रिपल. किसका? ग्रेटर नंबर का ट्रिपल. ग्रेटर नंबर कौन सा? अपना x है, बड़ा नंबर x है तो उसका ट्रिपल, सो 3x. और इनका सम था, राइट, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन. सम ऑफ यानी एडिशन. किसका सम? twice the smaller number यानी 2y and thrice the greater number यानी 3y. is का मतलब equal to कितना होगा? 19 होगा. That's your second equation. So you've got your first equation, you've got your second equation. You just have to solve it either using graphical method or Cramer's rule. I would suggest to use Cramer's rule. Or there's also substitution method. Okay, substitution method हमने 9th standard में पढ़ा था. When we studied linear equation in two variables in 9th grade. So वहाँ पे हमने substitution method पढ़ा था, but again due to pandemic उस substitution method वो लोग ने omit कर दिया तुम्हारे syllabus से. But you can use substitution method also. जो 9th standard में method हमने सीखा था वो भी यहाँ पे use करके तुम इन दोनों को solve कर सकते हो. That also is a very fast method. Or you can use Cramer's rule. So solve both of these equations. I'm leaving that up to you, and then your final answer will come. What will be your final answer? Final question क्या पूछा? Find the numbers. So you'll say the numbers are dash and dash. यहाँ पे x का जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे डाल दो, y का जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे डाल दो. That should be a final answer after solving these two equations. You are going to solve these two equations by yourself. हमने already काफी practice कर लिया दोनों simultaneous linear equation कैसे solve करता है, right? So this remaining calculation you'll do by yourself. So we are done with our first sum. Now let us see the third question first. Okay, I'm skipping the second question because third question is very similar to the first question. Hence it makes sense to do it together. So the third question I want you to first write by yourself. You'll know the steps now, right? First, read the question. Second time when you read the question, you figure out what variables will you take, and using those variables and the two conditions given in the question, you have to form two equations, and then you can solve it and find the final answer. So I want you to try by yourself for
Question number 3, to come up with the two equations. Read the question, think what variables will you assume, and use the two conditions given in the question to form two equations. Do that now before we start discussing. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and do that for yourself in your notebook. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and are ready with two equations for question number 3. Now let us discuss together. I'll first read the question. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. So I've read the question. From reading the question for the first time, I know that it is about father's age and son's age. That's what I got when I first read the question. Next is, what variables will I assume? What have they asked? As I told you, 90% of the times, 99% of the times, you get hint of what variables you should assume from what has been asked. What have they asked? Find their present ages. उनके present ages पूछे तो तुम x और y को क्या लोगे? X, let x be the present age of father, y be the present age of son. As simple as that. So let us write that. Let father's present age be x and son's, let me write it down, and son's present age be y. Okay, so हमारा second step भी हो गया. First step was to read the question, second step was to assume variables. We have assumed the variables. Now we can start writing equations using the conditions given in the question. Okay, so where is your first condition? The sum of father's age and twice the age of his son is 70. That's your first condition. So I'll write from the first condition. Okay, from the first condition, the sum यानी addition of father's age क्या है? Father's present age is x, तो x यहाँ पे लिख दिया, and twice the age of his son, twice यानी double, age of son क्या है? y है, तो उसका double, so 2 है. Okay, I'll read that again. Sum of father's age यानी plus यहाँ पे father's age x and twice of age of his son, twice यानी double of age of his son which was y is यानी equal to, is क्या है? 70 है. So that's your equation number 1. Simple, very similar to the first summary. Second, what's your second condition? If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. That's your second condition. So you'll write from the second condition. Okay, here I have written number and not in words, so here also I'll write in number from the second condition. Okay, okay, so now let us start looking at the second condition. If we double the age of the father का age क्या है? x है, उसको डबल करने बोला है, तो डबल करना है यानी 2 मल्टीप्लाई कर देना है. So double the age of the father कर दिया हमने, and add it to the age of his son. Okay, उसका son का age क्या है? y है, उसमें ऐड करने बोल दिया, तो ऐड कर दिया. तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? सम यानी जो एडिशन है इज यानी इक्वल टू 95. If we double the age of the father, 2x हो गया, and add it to the age of his son, y के एज में ऐड कर दिया, तो सम, ये जो एडिशन है उसको सम बोलते हैं, एडिशन इज 95. That's your second equation. You can call this as equation number 2. Now it is up to you all to solve both of these equations using either substitution method, Cramer's rule, graphical method, whatever. Find x and y and then write the final answer. What will be your final answer? Find their present ages, right? Father's
and sons present, वापस मेरा नीचे जा रहा है, right? Try to take it up now. Fathers and sons present ages are dash and dash respectively. Okay, that will be your final answer. You have to put this in pencil box. तो तुम्हें x का जो आंसर रहेगा वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, तुम्हें y का जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे लिखना है, and that will be your final answer. Okay, so solve these two equations by yourself and find this answer. I hope now you're getting a hang of how to convert sentences into equations. Okay, it's a very important skill to learn. It will be applicable, it will be useful even in your quadratic equation ke word problems. Okay, so it's a very important skill in mathematics to learn how to convert sentences into equations. Okay, so we are also done with our third sum. Next, let us see the fourth question given in practice at 1.5. Okay, but before we discuss it together, what I want you to do again is try to solve it by yourself. Okay, read the question, try to come up with the variables, try to write equations according to the given conditions in the question, and try to solve it by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to read the question, make two equations and solve it by yourself, and then we will discuss it together. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and do that for yourself first. Okay, 5 seconds are up. I hope you read the question and tried to solve it by yourself first. Now we'll discuss it together. Okay, so first I'll read the question. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. So when I first read the question, what I understood was it is about a fraction. Fraction के बारे में बात कर रहे हैं. Fraction में दो parts होते हैं, एक numerator एक denominator. उसके बारे में कुछ conditions दिए. That's the first thing which I noticed when I first read the question. Now my first step is to assume variables. So again, 99% of the times you will get hints of what variables you should assume from the last sentence, from the sentence in which where they ask what they want you to find. So they are asking you find the fraction. तो तुम फ्रैक्शन को वेरिएबल ले सकते हो क्या? लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, ऐसा चलेगा क्या? तो फिर तुम न्यूमरेटर को क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर को क्या बोलोगे, राइट? सो यू कैन टेक फ्रैक्शन एज एक्स, बट वहां से हिंट क्या मिल रहा है? फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो विल टेक न्यूमरेटर एज एक्स एंड डिनोमिनेटर एज वाई. So let us do that. Let us assume x is the numerator and y is the denominator. Okay, so our first step is done. We have assumed our variables. पूछा क्या है? Fraction, right? So what will be a fraction? Fraction will be equal to x upon y, isn't it? So fraction क्या होगा? X upon y. Now we'll start reading the conditions, and through the conditions start making the equation. So what is your first condition? The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. That's your first condition. So you'll write from the first condition. Okay, so the denominator of a fraction is, denominator क्या है हमारा? y. तो y is यानी equal to sign. 4 more यानी 4 ज्यादा यानी +4. 4 more यानी 4 ज्यादा. 4 more then किससे ज्यादा? Twice its numerator. Numerator क्या है? Numerator is x, उसका double. So twice its numerator यानी 2x. Clear है? I'm going to do this one more time. The denominator of a fraction is, denominator हमने y लिया है, so denominator of fraction is यानी y is equal to
फोर मोर यानी +4 ऐड कर, +4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, किससे 4 ज्यादा है, दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है x, तो x का डबल, ट्वाइस यानी डबल, सो 2x से 4 ज्यादा है क्या, डिनोमिनेटर। ओके, सो दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। बट ये गिव मी अ मिनट, आई विल राइट इट हियर, ax प्लस by प्लस नहीं, ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में है क्या। हम जनरली जब भी सॉल्व करते कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, राइट, ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में, उस फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस y ऑन राइट हैंड साइड, आई विल टेक दिस 4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो 4 लेफ्ट हैंड साइड में आके -4 हो जाएगा, 2x यहाँ पे ऑलरेडी था, प्लस y वहां पे जाके -y हो जाएगा, सो माई इक्वेशन बिकम्स 2x minus y is equal to -4. This I'll call as my equation number 1. Okay? इक्वेशन ये भी सही था, बट हमें जब सॉल्व करना होगा इस फॉर्म में लेके आके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, फिर y का कोएफिशिएंट होना चाहिए, फिर इक्वल टू साइन होना चाहिए, एंड देन यू शुड हैव द कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। So what's your second condition? Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. That's your second condition. So I'll write from the second condition. Okay, let us start reading. Denominator becomes 12 times the numerator if बहुत बड़ा if है यहाँ पे। ओके, सो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा y, नहीं, यस, y इज द डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर बिकम्स, तो y बिकम्स यानी बन जाएगा, यानी इक्वल टू, बराबर, y बिकम्स, सो डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स यानी 12 को किसी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को किसी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो 12 टाइम्स न्यूमरेटर हो जाएगा। इफ, बट एक कंडीशन है, ये तभी ट्रू होगा जब एक कंडीशन मीट होगी। कौन सी कंडीशन, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस्ड बाय 6 का मतलब क्या, 6 से कम हो जाएंगे, न्यूमरेटर भी 6 से कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 6 से कम हो जाएगा। सो व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, सो y -6 6 से कम हो गया, एंड तुम्हारा न्यूमरेटर x -6 ये भी 6 से कम हो गया, तो अब ये कंडीशन ट्रू है। ओके, what I'm going to do is I'm going to explain this one more time. I'm going to explain this one more time. Pay very careful attention over here. Okay, denominator becomes यानी y is equal to, बन जाएगा यानी is equal to हो जाएगा, right? Denominator becomes 12 times यानी 12 से मुझे किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 times न्यूमरेटर, सो 12 इंटू न्यूमरेटर क्या है मेरा x। बट ये कब ट्रू होगा, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन, वही वो कौन सी दूसरी कंडीशन है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, न्यूमरेटर का वैल्यू भी 6 से कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू भी 6 से कम होना चाहिए, तभी ये ट्रू होने वाला है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 6 से कम कर लो, यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू 6 से कम कर लो। सो दिस इज, यहाँ पे x लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लिकेशन साइन, आई कैन डायरेक्टली राइट 12 ब्रैकेट x minus 6 यानी 12 multiplied by x minus 6. So this is your second condition. Okay, again हमें इक्वेशन तो मिल गया, बट ये इस फॉर्म में है क्या, ax plus by is equal to c। हमें सॉल्व करने के लिए पहले x का कोएफिशिएंट, x का टर्म चाहिए, सेकंड y का टर्म चाहिए, फिर इक्वल टू साइन, और फिर कांस्टेंट टर्म। हमें इस फॉर्म में अच्छा लगता है देखना, राइट। सो वील हैव टू सॉल्व दिस। सो यहाँ पे y minus 6 का ब्रैकेट निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा आजू बाजू। 12 into x will be 12x, 12 into 6 is 72, और बीच में माइनस साइन, सो 12x minus 72। अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, x को मैं यहीं पे रख दूंगा, y वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा। ओके, y वाले टर्म को राइट हैंड साइड और ये कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी -6 था, -72 इस तरफ आएगा तो +72 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी 12x था, प्लस y वहां पे जाके -y हो जाएगा, राइट। सो +72 minus 6 that will be equal to plus 60
6 ओके प्लस 66 इज इक्वल टू यहाँ पे वैसे का वैसा 12x माइनस वाई. हेंस अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, इसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे. सो 12x minus y is equal to 66. That's your second equation. So you've got first equation, you've got second equation. Solve both these equations, you'll find the value of x and y, and what will be your final answer. x and y find out करने के बाद पूछा क्या क्वेश्चन में, x और y नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है find the fraction. So you'll write the fraction is box upon box. ओके यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू आएगा, एंड यू पुट दैट इन पेंसिल बॉक्स, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. सॉल्विंग आई एम लीविंग अप टू यू कि दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो वी आर आल्सो डन विद आवर फोर्थ क्वेश्चन. Okay, let us try to solve the fifth sum given in your practice set now. Okay, the fifth sum seems very difficult, right? इतना बड़ा sum है, अगर sum को explain करने के लिए इतने सारे sentences लगे हैं तो obviously बहुत difficult sum होगा, right? That's what people think, that's what students think, but that's not true. Okay, in fact, you will soon realize that this sum is actually a very simple sum. It is very similar to your previous sums that we have solved. Question number 1, 3, and 4. It's very similar and it's very simple. Okay. So again, I want you all to solve this by yourself first. Try to read the question first, try to understand what's going on in the question. Second step, try to come up with variables, assume some variables. Third step, using those variables and the conditions given in the question, try to come up with two equations. Okay, at least that you can do. Once you're able to do that correctly, then solving the actual equations is easy. We have a lot of practice for that, but we have had a lot of practice to solve linear equations simultaneously a lot by now, right? So that should not be a problem. So I want you all to pause the video here and try to solve this by yourself, and then we'll come back and try to solve this together. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you tried to solve the sums and you have two equations ready. If you don't have the two equations ready, if you are not able to solve it, that's okay. We'll solve this together now. Okay, so let me first read the question. Two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of the box. Okay? क्या बोला क्वेश्चन में, मुझे क्या पता चला क्वेश्चन रीड करके कि दो टाइप के बॉक्सेस है, टाइप ए टाइप बी. उन दोनों टाइप के बॉक्सेस को हमें एक ट्रक में भरना है और उस ट्रक का कैपेसिटी है. ओके, जो टन बोला है वो टन, राइट? 10 टन्स. टन्स इज अ यूनिट ऑफ वेट. जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे टन होता है. ओके, सो कितना वेट का कैपेसिटी होल्ड कर सकता है ट्रक, उसका लिमिट है. ओके, 10 टन, उससे ज्यादा वो वेट होल्ड नहीं कर पाएगा. एंड उन दोनों अलग अलग टाइप के बॉक्सेस को हमें ट्रक में भरना है. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड from reading the problem for the first time. The second step, I have to figure out what will be the variables. So variables के लिए हम क्या करते हैं? We see what is asked in the question, and from what is asked in the question, we try to see कि किसको variable ले सकते हैं, right? तो क्या पूछा? Find the weight of each type of the box. Simple है. अगर weight of each type of the box पूछा है तो box A का हम weight x ले लेंगे, box B का हम weight y ले लेंगे. As simple as that, right? And then we'll try to come up with equations in x and y. So let me write the assumption. Let x and y be the weights of boxes A and B respectively. ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या? रिस्पेक्टिवली यानी ए का वेट x है, b का वेट y है. दैट्स इट. या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेट x बी द वेट ऑफ बॉक्स ए एंड y बी द वेट ऑफ बॉक्स b. फिर रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट क्योंकि हमने साथ में लिखा है x एंड y इज द वेट ऑफ बॉक्स ए एंड बी, साथ में लिखा है तो रिस्पेक्टिवली ऐड करना पड़ता है. रिस्पेक्टिवली यानी बॉक्स ए का वेट x, बॉक्स b का वेट y. ओके, सो assumption is also done. Second step is also done. Now we start forming equations according to conditions. So
from first condition. What is the first condition? यहां से शुरू होता है, राइट? इस फुल स्टॉप के बाद से शुरू हो रहा है. And 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. Okay? 150 boxes. तो पहले 150 लिख दिया. 150 boxes of type A और उसका वेट कितना लिया हमने? X लिया, तो 150x. Then 100 boxes of type B, तो 100 लिख दिया. टाइप B के बॉक्सेस का वेट कितना लिया हमने? Y, तो Y ले लिया. तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है? जब उसको ट्रक में लोड करते हैं तो उसका वजन कितना हो जाता है? 10 टन. तो दोनों को मिला के 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे प्लस कर दी कि दोनों को मिला के 10 हो रहा है, राइट? सो दिस इज माय इक्वेशन. इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे 150, 100, 10 बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं. सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट. मैं देख रहा हूँ कि हर नंबर यहाँ पे 10 से डिवाइड हो सकता है. सो विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 10. सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन अगेन. 150x plus 100y is equal to 10. And what I'll do is I'll divide. Actually मुझे इससे पहले रीजन लिखने था. मुझे राइट साइड में स्पेस वेस्ट नहीं करना. Okay, I'll write the reason first. Dividing throughout by 10. तो क्या मिलेगा हमें? पहले मैं सेम इक्वेशन वापस लिख रहा हूं. 150x plus 100y is equal to 10. डिवाइड थ्रू आउट बाय 10. ओके, यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे 10 से डिवाइड. ये 10 10 कट होके 1 बच जाएगा. यहाँ पे एक 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 कट हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आई विल गेट एट द एंड इज 15x plus 10y is equal to 1. Okay, and this I will call as my equation number 1. क्लियर है? तो यहाँ पे भी इक्वेशन मिल गया था, बट यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स थे, तो मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ा ताकि मैं उस नंबर्स को छोटा कर लूँ. नंबर्स जितना छोटा करूंगा मैं उतना सॉल्व करने में इजी हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गया. और लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन. ओके, सो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, okay, so where's the second condition? But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Okay, fully loaded होना यानी क्या? पूरा का पूरा जो 10 टन्स है वहां तक पहुंच जाना. So fully loaded यानी 10 टन्स. Okay, 10 टन्स हो जाएगा एंड में, इसलिए is equal to 10 डाल दिया. When 260 boxes of type A are loaded, okay, type A के 260 boxes है, तो 260 इंटू टाइप ए. टाइप ए का हमने क्या वेट लिया है? x. 260 इंटू एक्स. जब टाइप ए का 260 बॉक्सेस हम भर देते हैं ट्रक में, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस, यानी और 40 बॉक्स रख सकते हैं टाइप बी के. सो 40 इंटू टाइप बी. टाइप बी के लिए y ले लिया उसका वेट, एंड दोनों को ऐड करोगे तो 10 टन आएगा, राइट? आई एम गोइंग टू रीड दैट वन मोर टाइम. बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए के 260 बॉक्सेस, ए के लिए x लिया, आर लोडेड इन द ट्रक, it can still accommodate 40 boxes of type B. वो और 40 boxes type B के accommodate कर सकते हैं. accommodate यानी उसको ट्रक के अंदर हम भर सकते हैं. तो हम दोनों को ऐड कर दिया. दोनों को ऐड करने के बाद so that it is fully loaded, वो fully load हो चुका है. fully load हो चुका है यानी क्या? उसका जो कैपेसिटी है 10 टन्स का वो मीट हो चुका है. अभी और उससे नहीं भर सकते हैं ट्रक के अंदर. तो इज इक्वल टू 10 आ गया. दोनों को मिला के 10 टन्स आ जाएगा. अगेन व्हाट आई कैन सी इज बड़े बड़े नंबर्स है, राइट? 260, 40, 10 आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 10. So same step I'll do over here, dividing throughout by 10. What will I get? I'll write the same equation again. 260x plus 40y is equal to 10. Divide every term by 10. 10 10 कैंसिल होके 1 आ जाएगा. यहाँ पे एक 0 कैंसिल, यहाँ पे भी एक 0 कैंसिल. सो व्हाट विल आई गेट? 26x plus 4y is equal to 1. This is your equation number 2. यहाँ पे 15x plus 10y is equal to 1, but 26x plus 4y is equal to 1. Okay.
can either use Cramer's rule or substitution method to solve these two equations. Okay, and what will be your final answer after solving? What will be your final answer? Final answer में final question में क्या पूछा? Find the weight of each type of box. Therefore, weight of box A is dash and box B is dash. Okay, that will be a final answer after solving these two equations and finding x and y. This you will put in pencil box and that will be your final answer. So put this in pencil box after solving these two equations and fill in the boxes. X का जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे लिखना है, B का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे लिखना है. यूनिट क्या होगा? वेट ढूंढ रहे हैं हम लोग, राइट? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. तो यूनिट क्या होगा? टन्स होगा. ओके, टन्स, यहाँ पे भी टन्स आएगा. क्यों? क्योंकि तुमने जब सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में तब तुमने सब कुछ टन्स में सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे भी आंसर तुम्हें टन्स में आएगा. ओके, सो दीज उसका यूनिट है टन्स. So you solve these two equations and write the final answer. That's your question number 5. It's already become a long video, so I'm not going to solve the second and sixth question in this video, in this learning session. The remaining two sums we'll see in the next learning session. Okay, so just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Students will be able to solve word problems based on linear equation in two variables. अभी word problem solve करने के लिए there are two parts, right? सबसे पहली बात क्वेश्चन से इक्वेशन लेके आ जाओ, फिर इक्वेशन से फाइनल आंसर तक चले जाओ. सो इक्वेशन से फाइनल आंसर हमने ऑलरेडी सीख लिया था इन द फर्स्ट 3 लर्निंग सेशंस, राइट? सो दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट. यू आर ऑलरेडी गुड एट दैट. यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज दैट फर्स्ट पार्ट? क्वेश्चन से इक्वेशन तक जाना. तो मैंने तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, तो उस वर्ड प्रॉब्लम का जो उस वर्ड प्रॉब्लम के जो सेंटेंसेस है उससे तुम 2 इक्वेशंस बना सकते हो कि नहीं, वो तुम्हें चेक करना है. ओके, सो जस्ट चेक whether you've accomplished today's learning objective or not. And that is it for this learning session, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.